My dear learners, here we are going to discuss noun number. Means we are going to discuss the number case of noun. Number means one or more than one. So here we go. Noun number. A noun has two numbers, one singular and two plural. तो हर नाउन का दो नंबर होता है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल. जनरली अ नाउन हैज़ टू नंबर्स, one is singular and the other is plural. So what is singular noun and what is plural noun, I have already told you in the previous topic, noun and its types. So here we are going to discuss how plurals are formed from singular nouns. So we will be discussing about the rules for formation of plurals. Rules for formation of plurals. The first rule of formation of plurals from singular noun says, for regular nouns just add s to the end to make them plurals. It means generally what do we do to make a singular noun into plural? We add s at the end to make it plural. For example, cat becomes cats, so we have just added s. House becomes houses, and again we have added s to make it plural. Ball becomes balls. Here also we have just added s at the end to make it plural. So this is the first rule for formation of plurals. Then second one, add es to nouns ending in s, double s, sh, ch, x and z to make them plurals. So whenever you find nouns or a noun ending in s or double s or sh or ch or x or z, what do? We just add es. We add es to make them plural. तो जब भी कोई नाउन, सिंगुलर नाउन जिसका अंत में s आता है या डबल s आता है या sh आता है या ch आता है या x आता है या z आता है, तो ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग लास्ट में es जोड़ देते हैं और उसे प्लूरल बना देते हैं. Now let us see some examples how the nouns ending in single s, double s, sh, ch, x and z are converted into plurals. You see bus, it becomes buses. We make it plural by adding es. Similarly, gas, it is ending in a single s, so it becomes gases by adding es. So it has become plural after adding es. Then class, so this is a noun ending in double s. Again we add es to make it plural, so it becomes classes. Again glass, it is a noun ending in double s, so we add es to make it plural. So this is a word bush, this is a word ending in sh, so we make it plural by adding again es, bushes. Clash, so this has become plural by adding es, clashes. Then church, so this is a noun ending in ch, the plural is formed by adding es, churches. Bench, again the plural is formed by adding es. Fox, this is a noun ending in x, the plural is formed by adding es, foxes. Tax, again the plural is formed by adding es. Then bleach, this is a noun ending in z, the plural is formed by adding es, bleaches. Bleach, the plural is formed by adding es, bleaches. So what does rule number 3 say? Let us see. For nouns ending in f or fe,
change F or FE into VE and add S at the end to make them plural. तो जब भी कोई नाउन आखिर में F लेटर लेता है या FE लेटर्स को लेता है तो उस समय प्लूरल कैसा बनाते हैं हम लोग, तो उस समय हम लोग F और FE को VE में बदल देते हैं। F और FE को VE में बदल कर और लास्ट में S जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू सी वुल्फ, सो दिस इज अ नाउन एंडिंग इन F, सो हाउ द प्लूरल इज फॉर्म्ड, द F इज लेफ्ट आउट, F को हम लोग छोड़ देते हैं, उसके जगह में VES, वुल्फ्स। उसी प्रकार काफ में भी F है तो हम लोग F को छोड़ देंगे, उसके F का जगह में हम लोग लिखेंगे VES, calves. Then wife, so this is a noun ending in FE. The plural is formed by dropping FE and adding VES, WIVES, wives. Similarly knife, FE is dropped, FE को हम लोग हटा देते हैं, उसके जगह में VES लगा देते हैं, so it becomes knives. So this is how generally nouns ending in F or FE are converted into plurals. But despite having said that, there are some exceptions. Some nouns ending in F or FE which do not follow this rule of adding VES after dropping F to make them plural. So some exceptions are there which do not follow this rule. They only take S at the end to make get converted into plurals. You see the exceptions are roof, यहाँ पर F है लेकिन हम लोग F को यहाँ नहीं हटा रहे हैं, F को रहने देता है और S लगा के प्लूरल बना देते हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। उसी प्रकार बिलीफ में भी, इसमें भी क्या है, F को हम लोग नहीं हटाते हैं, ऐसे रखते हैं और अंत में S जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। उसी प्रकार शेफ़ मतलब कुक, खाना बनाने वाला, तो शेफ़ में भी क्या होता है, शेफ़ का भी प्लूरल S डाल के बनता है। तो उसी प्रकार प्रूफ का भी प्रूफ्स, इसमें F हम लोग नहीं हटाते हैं और लास्ट में S जोड़ देते हैं। उसी प्रकार चीफ का भी प्लूरल चीफ्स होता है, ना कि हम लोग F को हटा के VES डालते हैं, तो इसका चीफ का भी सिर्फ हम लोग लास्ट में S डाल देते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो इस रूल नंबर 3 को नहीं मानते हैं। Then moving on to rule number 4, what does rule 4 say? If a singular noun ends in Y and the letter before the Y is a consonant, then change Y to IES to make it plural. इसका मतलब यह है कि जिस नाउन में लास्ट में Y आता है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो उस समय हम लोगों को Y को हटाकर IES डालकर उसका प्लूरल बनाते हैं। अभी आप लोगों को ये कॉन्सोनेंट क्या है ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या होता है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स है 26 लेटर्स है, वो 2 ग्रुप में बटा हुआ है, एक है वोवेल, एक है कॉन्सोनेंट। वोवेल 5 है और कॉन्सोनेंट 21 है। वोवेल है AEIOU, और ये 5 वोवेल को छोड़ के बाकी जितना 21 लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर कोई नाउन लास्ट में Y लेता है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, तब हम लोग Y को ड्रॉप कर देते हैं, Y को हटा देते हैं और उसका जगह में हम लोग IES डालकर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यू सी बेबी, BABY, तो लास्ट में क्या आया है Y, लेकिन Y से पहले क्या है B तो कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो AEIOU है, तो ये B तो कॉन्सोनेंट है। तब हम लोग क्या करते हैं, Y को हटा देते हैं और उसका जगह में IES, बेबीज, इस प्रकार प्लूरल बनाते हैं। और एक एग्जांपल है सिटी, तो इसमें भी ये जो T है कंसोनेंट है, तो इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये Y को हटा देते हैं, उसके जगह में IES, सिटीज़।
fly. Again here L is a consonant. So in such a situation, what do? We just drop Y and add IES to make it plural. Then puppy. Again you here see here P is a consonant. So in that case we drop Y and add IES to make it plural. So this is rule number 4. Then rule number 5 says, if a singular noun ends in Y and the letter before the Y is a vowel, then simply add an S at the end to make it plural. अगर कोई noun Y में एंडिंग करता है लेकिन Y से पहले कोई वोवेल आ जाता है, यानी A, E, I, O, U में से कोई एक लेटर आ जाता है, उस समय हम लोगों को Y को नहीं हटाना पड़ता है, Y ऐसा ही रहेगा और लास्ट में हम लोग सिर्फ S जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखो, रे, अभी RAY, इसमें लास्ट में Y है लेकिन Y से पहले क्या आया है? A, तो A तो एक वोवेल है, तो इस सिचुएशन में हम लोग Y को नहीं हटाते हैं, Y को ऐसे रहने देते हैं, लास्ट में सिर्फ S जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो ये हो गया रेज। डे, अगेन देखो डे में भी इसमें Y से पहले A आया है, A इज अगेन ए वोवेल, सो वी जस्ट एड S टू मेक प्लूरल। देन बॉय, तो इसमें भी लास्ट में Y है, तो Y से पहले क्या आया है? O, तो O इज अ वोवेल, सो इन सच ए केस, इन सच ए सिचुएशन we just add S to make the noun singular noun plural. की, यहाँ में भी देखो Y है, Y से पहले E है, E एक वोवेल है, तो हम लोग क्या है Y को रहने देंगे और S डाल देंगे। अगेन टॉय, टॉय में भी यहाँ पर O है वोवेल, तो हम लोग S जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अगेन गाय, तो गाय में क्या है कि देखो यहाँ में Y से पहले क्या है? U, तो U भी तो वोवेल है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एंड में S ऐड करके प्लूरल बना देते हैं। Then we will go to rule 6. Rule 6 says, if a singular noun ends in O, add ES to make it plural. अगर कोई सिंगुलर नाउन O में एंडिंग करता है तो उस समय हम लोग क्या करता है? पीछे में ES जोड़ देते हैं, ES जोड़कर उसको प्लूरल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू से पोटैटो, पोटैटोस, तो पोटैटो पोटैटो ही रहेगा, लास्ट में ES जोड़ दिया, प्लूरल बन गया। टोमेटो, अगेन लास्ट में O आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? ES डाल देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। देन सेम इज बफलो, तो यहाँ में भी लास्ट में O आया है, तो हम लोग ES डाल देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, बफलोस। मैंगो, अगेन इट एंड्स इन O, सो व्हाट डू? वी जस्ट एड ES टू मेक इट प्लूरल, मैंगोस। So this is rule 6. But again, here also there are some exceptions. You see, there are some exceptions. There is no explanation for why these exceptions are there, why these nouns they do not follow these rules, but it is like that only. You have to just follow that one. You see, photo, some exception. फोटो में क्या है कि इसमें हम लोग ES नहीं डालते हैं, सिर्फ S डालते हैं, फोटोज। पियानो में भी हम लोग सिर्फ S डालते हैं प्लूरल बनाने के लिए। रेडियो, रेडियोस, तो इसमें भी हम लोग सिर्फ S डालते हैं। मेट्रो, मेट्रोस। सोलो, सोलोस। हेलो, हेलोस। तो ये सब जितना है कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन फिर सम आर रिटन इन बोथ वेज। कुछ नाउन्स है जो O में एंडिंग करता है, तो उसको हम लोग दोनों तरह से लिख सकता है। तो दोनों तरह से लिखा जाने वाला को हम लोग सही मानते हैं। उसमें से अगर हम लोग ES डाल के भी प्लूरल बनाता है तो भी गलत नहीं है, या सिंपली S डाल के भी प्लूरल बनाते हैं भी तो गलत नहीं है। उसी कार्गो को देखो, हम लोग सिर्फ S डाल के भी प्लूरल बना सकते हैं और ES डाल के भी प्लूरल बना सकते हैं, और दोनों को हम लोग कार्गोस ही बोलेंगे। उसी प्रकार वोल्केनो में भी हम लोग सिंपली S डाल के प्लूरल बना सकते हैं, नहीं तो ES डाल के भी प्लूरल बना सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है जो हम लोग दोनों ढंग से we can write them in both ways. Rule 7. If the singular noun ends in IS, the plural is formed by changing IS to ES. अगर कोई सिंगुलर नाउन IS में एंडिंग होता है तो उसका प्लूरल हम लोग कैसा बनाते हैं?
IS का जगह में हम लोग ES डाल देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल देखो एनालिसिस, तो यहाँ पर IS में एंडिंग हो रहा है, तो उसका प्लूरल क्या हो गया, IS का जगह में हम लोग ES डाल देते हैं, एनालिसिस। इलिप्सिस, तो इसमें भी IS एंडिंग हो रहा है, तो इस जगह में हम लोग क्या करते हैं, ES डाल देते हैं, इलिप्सिस। ये कुछ वर्ड्स है जिसका प्लूरल इस तरह से बनता है। देन रूल 8, if the singular noun ends in on, the plural is formed by dropping on and replacing it by a। जिस सिंगुलर नाउन में अंत में on आता है तो उसका प्लूरल कैसा बनता है, हम लोग on को हटा देते हैं, उसका जगह में क्या लिखते हैं, डाल देते हैं सिर्फ a। एग्जाम्पल देखो, फेनोमेना on आ रहा है, तो इसका प्लूरल कैसा बन गया, on को हटा के लास्ट में a डाल दिया, फेनोमेना। उसी प्रकार क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन भी on में आ रहा है, तो उसका प्लूरल क्या हो गया, on को हटा के a डाल दिया, क्राइटेरिया। देन मूविंग टू रूल 9, if a singular noun ends in us, the plural is formed by replacing us with I। in case singular noun is ending in us, जिसका end में us आता है, in that case what do? We just drop us को हम लोग हटा देते हैं, and in its place we just put I to make it plural। For example, you see syllabus, it is ending in us, so what do we do to make it plural? We just drop us को छोड़ देते हैं, and we add I in place of us, syllabi, it has become plural। Then radius, again it is ending in us, so we drop us and replace it by I, it becomes radii, plural। Then cactus, it is also ending in us, so its plural is formed by dropping us and replacing it by I, cacti। Focus, again it is ending in us, so the plural is formed by dropping us and replacing it by I, foci, etc. Then rule 10, some nouns don't change at all when they are pluralized। तो कुछ नाउन है जो जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आता है। सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होता है, उसका सिंगुलर भी प्लूरल भी दोनों सेम होता है और उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। तो जैसे है कुछ है, ये देखो, शीप का प्लूरल शीप ही होता है, सीरीज़ का प्लूरल भी सीरीज़ ही होता है, स्पीशीज़ का प्लूरल भी स्पीशीज़ ही होता है, डीर का प्लूरल भी डीर ही होता है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो जिसका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों एक ही होता है। अभी फिश का भी सेम फिश ही होता है, लेकिन फिशेस कब बनता है, सो फिशेस हम लोग कब लिखते हैं प्लूरल, जब ES डाल के कब लिखते हैं, सो व्हेन रेफर टू मोर देन वन स्पीशीज ऑफ फिश। एक ही जाति का मछली बहुत सारा होने से हम लोग फिश का फिश ही लिखते हैं, लेकिन अलग अलग जाति का मछली लोग जब अलग अलग प्रकार का अलग अलग स्पीशीज़ का मछली लोग जब हम लोगों को एक साथ एक जगह में मिलते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग लिख सकते हैं फिशेस। अदरवाइज जनरली द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश इटसेल्फ। So let us see what does rule 11 say. Irregular nouns follow no specific rules, they form plurals irregularly। So at the beginning of this topic I told you about the rule 1 of formation of plurals, wherein I mentioned that the regular nouns form plurals by just adding s, but there are also some irregular nouns. These irregular nouns do not follow any rule to form plural, they form plurals randomly and irregularly। You see example, you see child, it becomes plural is the child, the plural of child is children, it is not childs। Again woman, it is women, not womans। Goose, it is geese and not gooses।
Tooth, the plural is teeth, not tooths. Man, the plural is men, not mans. Foot, the plural is feet and not foots. Mouse, the plural is mice, not mouses. Person, the plural is people. Louse, the plural is lies. Now this serial number 2, it is not exactly a rule, but even then I am giving you this one. I am telling you this one for your information and knowledge sake, that some nouns are always plural. So कुछ nouns होता है जो हम हमेशा plural में use करते हैं. Example: trousers, forceps, scissors, shoes, socks, glasses means spectacles, pliers, binoculars, goggles, pants, clothes, riches, congratulations, ruins, jeans, leftovers, remains, wages, source. So all these words are always used in plural. So we cannot say that we cannot say shoe, because we don't put on only one shoe. We have to put both the shoes in our both the legs. Therefore they are always used in pairs. Therefore we use them in plural. Now the last and serial number 13. Again, this is not a rule exactly. This is same as serial number 12. Some nouns are singular although plural in form. कुछ noun जो लगता है plural है, दिखने में plural लगता है, लेकिन plural नहीं होता है, singular होता है. Example: news, measles, comps, rickets, billiards, mathematics, physics, gymnastics, furniture. You see, these are words which look like plural because they are ending in s. So we assume that they are plural, but they are not plural, they are singular. News is not the plural of new. So news is a word by itself, so it is singular. So we say what is today's news, we don't say what are today's news. Therefore news is singular. The same is with all the other words. And again you say mathematics. So mathematics is not the plural of mathematics. Mathematics is a word by itself. Same is with physics, gymnastics, furniture, etc. So we don't say that mathematics are very hard. We say mathematics is very hard. That means mathematics is singular. Then one thing that you have to know and keep in your mind: all uncountable and abstract nouns are singular. You see, uncountable noun means the nouns like water, milk, honey, dust, air. So these are uncountable nouns, we cannot count them. And the abstract nouns like love, affection, discipline, honesty, sincerity, they are the abstract nouns. And these abstract nouns and the uncountable nouns, they are always used in singular. Example, you see, we say water is precious. So this is correct. We don't say waters are precious, or we don't say water are precious. So there is no word like waters at all. So we say water is precious. So this verb is, it shows that water is singular. Then love is blind. Again we are using is. So is singular. Therefore
it indicates that love is singular. We don't say love are blind, or we don't say loves are blind. So love is blind, water is precious. So this thing you should keep it in your mind. So this was all about the topic on noun number, means the number case of noun, singular and plural.